बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व नुसल्ली व नुसल्लिम अला मुहम्मद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़क़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, mina kära bröder och systrar, vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala för ännu en gång som Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss möjlighet att vi är här för Allahs skull, vi samlas för Allahs skull. Alhamdulillah, vi tänker Allah subhanahu wa ta'ala, this great opportunity Allah has given us, Allah chose us, Allah gave us ability to be here together here to please Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और बहनों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अपने लिए जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हमने जो है पिछले जुमे के अंदर बात की थी फ़क़र और ज़ुहद के ऊपर। यानी एक है जिस हालत में अल्लाह ने आपको रखा हो, कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग़ुरबत के अंदर इम्तिहान लेते हैं, कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ देने के बावजूद इम्तिहान लेते हैं कि उसके अंदर इंसान उन नेमतों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारे। तो फ़क़र में भी इम्तिहान है और ज़ुहद के अंदर भी इम्तिहान है। और ज़ुहद की तारीफ़ हमने बात की थी कि वो क्या है कि नेमत अल्लाह की जो हमारे पास हैं, चाहे वो माल है, चाहे वो दुनियावी कोई भी नेमत हमारे पास है, उसको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ ऐसी दिल लगी ना हो कि उससे छूटने से या उसके होने से अल्लाह से दूरी हो जाए। तो वो ज़ुहद है। आपके पास है सब कुछ, लेकिन आपका ऐसा ताल्लुक़ नहीं है उससे, उसके अंदर ऐसे नहीं लगे हुए कि उसी के जो है आप उसी पे जो है सारा आपका यकीन है कि यही है मेरा सब कुछ। नहीं, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने दी हुई है, चाहे वो माल हो, चाहे औलाद हो, चाहे घर वाले हों, चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपके पास है, चाहे अपनी सेहत है। तो ये है जब तक अल्लाह ने दी हुई। चली गई उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र करें, है तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र करें। और सब्र क्या है उसके अंदर, उन हालत के अंदर कि अल्लाह की इताअत करें। So last week in Jummah we had a subject and topic about faqr and zuhud, and we especially focus on zuhud and explained the real meaning of zuhud. It is actually whatever Allah has given you, do not attach to yourself to that in such a manner that it takes you away from Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhud is not, some people explain zuhud as it is something like similar to when someone have nothing of this world and he's zahid and he's disconnected. You should be connected. This is the special quality of Ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. You are connected to everyone, but in the same time you are disconnected in such a manner that when it comes to the order and commandment of Allah, you say that goes before everything. You use, but you don't abuse. You utilize, but you don't utilize in such a manner that you disconnect you from Allah subhanahu wa ta'ala. Because whatever is Allah has given you, it is from Allah and it is test from Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever Allah has deprived you from, that is also from Allah subhanahu wa ta'ala. And it is also test from Allah subhanahu wa ta'ala. So faqr and zuhud is kind of a balance. If you don't have, you have patience. And if you have, you are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala.
Så förra veckan i fredagsbön, vi pratade om faqr och zuhud och vi förklarade balansen. Att om man inte har någonting, det är också test. Allah testar. Hur hanterar vi den situationen? Det är jobbigt, men hur hanterar vi? Och om man har, hur hanterar vi det? Det kan vara vad som helst. Det kan vara familj, det kan vara jobb, det kan vara utbildning, det kan vara förmögenhet. Allah har gett dig. Att man har är inte emot islam. Att vi använder är inte heller mot sunna. Men det som är mot sunna är det som vi har tar oss ifrån Allah subhanahu wa ta'ala. Då är vi på gränsen. Att det som vi har tar oss från Allah subhanahu wa ta'ala på ett sånt vis. Exempelvis är att jag hinner inte be. Jag har inte tid. Jag är så upptagen med mitt jobb. Eller jag orkar inte gå för hajj för jag har så mycket. Så ansvar som vi har från Allah subhanahu wa ta'ala, skyldigheter som vi har gentemot vår skapare, att vi hindras från det, då är risken att den gåvan som Allah har gett dig tvärtom kan orsaka problem hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så zuhud är inte att inte ha någonting. Zuhud är att ha men inte drunkna. Som vi gick igenom förra veckan. Det är som en båt som inte ens stannar på hamnen och inte drunknar mitt i havet. Den når destinationen. Och destinationen är att nå Allah genom alla de här prövningarna som vi går igenom. Och idag, i koppling till det vi har pratat om zuhud, vi ska prata om tawakkul. Vad tawakkul egentligen är i en hadith av profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar tawakkul av en fågel. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger om människorna, om mänskligheten ska ha tawakkul som fågel, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala ge er riskförsörjning på samma sätt också. Vissa stannar där och tycker att fågel gör ingenting. Den får ändå risk. Den anstränger för att den fortsättning av en hadith är att den går ut taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Att den går ut, då är den tom mage på morgonen. Men när den kommer tillbaka på kvällen, då är den mätt och belåten. För den har ansträngt sig för risk. Och det är därför också i Koranen när Allah pratar om Jum'a. Ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Det här är första versen. Om Jum'a. Att man ska lämna allt och komma. Men vad händer efter? Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Och där mufassirin har skrivit att man ska sprida ut på Allahs mark och söka Allahs fazl. Vad är det? Risk av Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah beordrar själv att vi ska gå ut. Men vi ska balansera på ett sätt när Allahs böneutrop kommer till oss. Och vi vet det är salattid, då lämnar vi. Och vi kommer till Allah. Men när vi är klara, då går vi ut och gör det vi behöver göra. Så balansera mellan huququllah och huququl ibad. Rättigheter och skyldigheter som vi har gentemot Allah subhanahu wa ta'ala och skyldigheter som vi har gentemot oss själva och medmänskligheten. Vi måste balansera. Man kan inte överdriva med ena och utesluta det andra. Vi måste balansera. Och det är det handlar om. Och det är målet att göra. Men vem är förebild i detta? Det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. För att se hur han sallallahu alaihi wasallam på ett perfekt sätt balanserade livet. Om vi säger att vi var upptagna, öppna upp sira och kolla hur upptagen profeten sallallahu alaihi wasallam var. Men ändå tog ut tid för sig själv, för familjen, för umma, för Allah subhanahu wa ta'ala och för mycket annat runt kring. Balans. Okej, det var baraka i hans liv som vi saknar, men det är också på grund av att vi lämnar sunna, därför vi har inte baraka i livet. Vi lämnar profetens levnadssätt och levnadsvanor, därför vi saknar baraka i vårt liv. Den här välsignelse i tiden, att tiden ska räcka. Så det här med tawakkul, det är viktigt att träna. So regarding today's subject, it is about tawakkul, which is connected to zuhud actually. In the sense that
You have everything, but you don't rely on it. And same with tawakkul is that you make effort, but you rely on Allah subhanahu wa ta'ala. Result Allah will provide. It's not in anyone's hands. You are ill, you have some disease, you go to doctors, but the result is not in their hands. They make effort, but they are not giving the result. Allah is giving the result. You make effort. It's like you're preparing for your exams. You have to make preparation. That's in your end, but Allah will give result. So tawakkul, it has two sides. One is you make effort and then put your needs in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, I did my part. Ya Allah, please help me. Because without Allah's help, we are not getting anywhere. So that's the balance in tawakkul. Tawakkul is not that, okay, I will not do anything, Allah will just give me without making effort. It's an example of Nabi sallallahu alayhi wa sallam in hadith that he said, when you make tawakkul on Allah, Allah will give you, Allah will feed you like birds. And what is the real meaning of this hadith? If you complete that hadith, some people just mention the first part of this hadith. Second part of this hadith is تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. That they go empty stomach in the morning, but they come full stomach when they come in the evening. It's the sign that they make effort in the day. They go and seek Allah's blessing on Allah's planet. And same way Allah is ordering us. When we read about Jummah in Surah Jummah, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. That Allah first ordering us to come to Jummah when you hear the muazzin. And here is also one discussion regarding which azan we are talking about, and according to most of the mufassirin, it is the second azan which the muazzin calls before the khutbah. So when you hear the muazzin call, you should leave everything and you should come for salah. Leave everything. This is order of Allah subhanahu wa ta'ala. But what you do after, it is also commandment of Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. When you're done with salah, you've done your part and you've done your duties, when you come to Allah subhanahu wa ta'ala, go and you do your duties which are connected to yourself and your families and your near and dear ones. So you have to fulfill both paths, and that is the balance. And that is tawakkul, that you make effort, but you rely on the result which Allah will give you. I go out to seek today's earning, it is my effort. But if it is written for me, that is the result of Allah. I go in the exam hall and I am writing the exam and I'm making my effort, I have prepared. But it doesn't mean that I will be successful in the result. It is, result comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he made effort. Nuh alayhi salam, he made effort. All the prophets, they made effort. Sahaba, they made effort. Nuh alayhi salam, he made effort. قَوْمِ دَعَوْتُ لَيْلًا وَنَهَارًا. It's lesson in Prophet's life. He made effort of 950 years. What was the result? About 80 people came and listened to him and followed him. He was successful. He was amongst the prophets, which one was the most successful prophet? Ulul Azm. So result is not in our hand. Today we go for the result which is seen in numbers. If I'm making effort on social media, I have to have a lot of numbers. A lot of likes. That's the result. But that's not the result. The result is, if you made effort and you are clear with your intention, Allah will reward you in hereafter. Even for your intention of providing your family, even for your intention of your going good in this life, Allah will make you and give you whatever you deserve in hereafter. We are not here for results. We are here for efforts, and result we will get in hereafter. And if we have that thinking, that mindset, which will never break us. What happens, we are after the result, as soon we don't get the result we want, it breaks us. But it will make us when we are ready that Rada bil qada.
I am pleased with whatever result Allah gives me. I will make effort on my side, but result Allah will give me. And if Allah give me a result which I didn't want, then I will turn back toward the teaching of Prophet ﷺ, teaching of Quran. And what is Quran saying to me? Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Sometimes you like something, but it is not good for you. Sometimes you dislike something, but that is good for you. And many times in our life we have seen it. I didn't get something I disliked. Oh, I had to get that. That was my aim to get. That was the result I was waiting for. I didn't get the result, and now I'm disappointed. I'm broken. But later on, I realized after 5 or 10 years, that was good for me. That I didn't get that thing. Because Allah is promising in Quran. Because we don't see the whole picture. We just seeing in this four wall what is in front of us now. Allah knows everything, both what is going with us here and what will happen in next life. So we have to have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, rely on Allah subhanahu wa ta'ala, and on Allah's decision. It will make us, otherwise it will break us. That's the bottom line. Rely on Allah, whatever is outcome of whatever you're doing in your life, it will make you more stronger. And that was happening with Sahaba and even with prophets. With every test of Allah subhanahu wa ta'ala, they were getting stronger. They are losing their children, they are losing their families, they are losing everything, but they're getting stronger. And you are witnessing today in this time around the world. People are getting stronger when they have tawakkul. They are losing everything. They are losing families. They are losing the houses. They are losing the cities. But they're saying, Allah is with us. This is tawakkul which makes you stronger whatever happens. Whoever is with you or whoever is not with you, tawakkul will make you stronger. But we have to be strong enough to rely on Allah's destiny. Qadar, it is part of Iman. If you shake on that, you are shaking on your Iman. Allah is saying, La taqnatu min rahmatillah. Do not be, displeased with Allah's destiny. Do not lose hope in whatever Allah is promising you, in Allah's mercy. Att vara inte missnöjd med Allahs nåd. Den är där för oss. So, हमें एक बात समझने की है, तवक्कुल क्या चीज़ है. वो बैलेंस है उसके दरमियान का कि हम इस बात को समझें कि अल्लाह ने कुछ हमें दे दिया, वो भी अल्लाह की तरफ से है, नहीं दिया वो भी अल्लाह की तरफ से. हम और तवक्कुल के असल माने क्या है कि अल्लाह के तकदीर के ऊपर हम ऐसे एतबार कर लें कि हमने मेहनत करनी है, मेहनत हमने नहीं छोड़नी, लेकिन जो नतीजा होगा वो अल्लाह के पास है. चाहे वो इम्तिहान है, चाहे आप कमाई करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी दुनिया का मामला है, तो तवक्कुल असल क्या है कि हम इस बात को समझ लें, मैंने मेहनत करनी है, रिज़ल्ट अल्लाह ने देना है. नूह अलैहिस्सलाम को देखें, कितने सालों उन्होंने मेहनत की, रिज़ल्ट अल्लाह ने उनके लिए क्या लिखा था? 80 लोग. आज हम जाते हैं इसके ऊपर कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया. अगर अल्लाह के यहाँ हम कबूल हो गए तो वो असल काबिलियत है. अगर अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल कर लिया तो हम असल में कामयाब हो गए. सो ये बात समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मकबूल हो जाए. वो कैसे होंगे? जब हम सही मानों में तवक्कुल. और तवक्कुल नहीं होगा तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा ये भी सुन लें. नहीं होगा तो कोई भी चीज़ हम दुनिया के अंदर करेंगे जो आज देख रहे हैं, उसका रिज़ल्ट उसके मुताबिक नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ, तो क्या होगा कि हम डिप्रेशन में भी जाएंगे, मुख्तलिफ़ ख़यालात में भी जाएंगे, ईमान से भी दूर होंगे, अल्लाह से भी दूर होंगे, क्योंकि मुझे ये चाहिए था नहीं मिला. लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि कभी आप सोचते हैं कि आपको ये चाहिए, आपके लिए अच्छा है, लेकिन अल्लाह को पता है आपके लिए अच्छा नहीं है. कभी आप सोचते हैं आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह को पता है आपके लिए अच्छा है. और हमें बाज़ दफ़ा कई सालों बाद एहसास होता है, यार वाकई ये मेरे लिए अच्छा नहीं था या ये मेरे लिए अच्छा था. लेकिन अल्लाह का इल्म कामिल है. हम तो सिर्फ ये देख रहे होते हैं जो हमारे सामने, वो भी सही तरह नहीं देख रहे होते. तो अल्लाह पे जिसने तवक्कुल कर लिया वो हर हालत के अंदर मजबूत होता रहेगा. आज भी दुनिया में हम ये देख रहे हैं, आज की हालत में कहीं नहीं देख रहे तो सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं कि वो जिनके ऊपर जुल्म होते जा रहा है, मजलूम और मजबूत होते जा रहे हैं. कह रहे अल्लाह है और अल्लाह से ही होता है.
वो मजबूत क्यों हो रहे हैं कि तवक्कुल उनके यहाँ ऐसा बैठा हुआ है कि रिजल्ट किसी और के हाथ में नहीं है, ना जालिम के हाथ में रिजल्ट है, ना मजलूम के हाथ में रिजल्ट है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। हम करेंगे और हमारे लिखा ही अल्लाह ने हमारे लिए करना है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहे अल यौमु यौमुल अमल वला हिसाब, कि आज करने का दिन है और कोई हिसाब नहीं है। वगदन यौमुल हिसाब वला अमल, कि कल जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह हिसाब लेंगे और अमल के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं होगी कि अब मैं कर लूँ या मैं रेक्टिफाई कर लूँ या मैं अपने अमल को सही कर लूँ। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सही मानों में समझ की तौफीक अता फरमाए कि हम तवक्कुल के मानों को समझ सकें और अल्लाह पे यकीन इतना मजबूत कर लें कि कोई भी हालात हमें तोड़े नहीं बल्कि जोड़े और मजबूत करें। हालात हमें और मजबूत करेंगे जब हमारा तवक्कुल सही होगा। So may Allah give us ability to understand the real meaning of tawakkul, and which is the way of being more stronger by this different tests of Allah which comes towards us. It will make us more stronger if we are having strong tawakkul, inshallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss och ge oss rätt förståelse för att förstå ordet tawakkul eller själva tawakkul på ordentligt sätt. Den kommer underlätta att vi blir bara starkare och starkare med alla prövningar som kommer mot oss. För att tawakkul finns, då vet vi att allt som kommer är från Allah, allt som går är också av Allahs bestämmelse. Må Allah subhanahu wa ta'ala underlätta för oss. Innan inshallah sunna, jag vill bara meddela, från nästa fredag, vilket är 24 november, så sista fredag i november, hela december och första fredag i januari månaden, det vill säga 7 fredagar framåt nu, kommer vi börja khutba och salah 12:20 istället för 12:30. Och det är med för att asr-tiden kommer vara väldigt nära. Så 12:20, 10 minuter innan den tiden som vi har vanligtvis. 7 fredagar framåt. So just want to inform before the sunnah. From next Friday, which is last Friday in November, until first Friday in January. So last Friday in November, whole of December, and first Friday in January, we will pray, we will start khutbah azan and khutbah and then salah 20 past 12 instead of half past 12. So 7 Fridays ahead inshallah. तो इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि अगले आने वाले जुम्मे जो हैं 24 तारीख को जो जुम्मा है, यानी जो नवंबर का आखिरी जुम्मा, फिर पूरा महीना दिसंबर का और जनवरी का पहला जुम्मा, उसमें 12-20 के ऊपर हम यानी अजान और फिर खुतबा और फिर इंशाल्लाह नमाज होगी, यानी 10 मिनट पहले, 12:30 की जगह 12:20 के ऊपर। असर का वक्त करीब है, इस वजह से इंशाल्लाह ये एहतियात करेंगे। तो अभी हम सुन्नतों के लिए खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रख लें कि भाई करीब आ जाएँ और जो बीच में जगह है उनको जो है पूरा कर लें इंशाल्लाह। सो वी विल स्टैंड अप फॉर सुन्ना नाउ इंशाल्लाह। प्लीज़ fill in the gaps and make space for others inshallah. Come forward inshallah. Vi står för sunna men vi gör plats för andra inshallah. Så kom framåt. Jazakallah khair inshallah.